Good morning, students. I am Samir, and today I am going to teach you second semester standard 7 lesson number 1 medieval Gujarat. In this lesson we discuss about what was happened in Gujarat medieval period. In this lesson, art and culture, architecture, and about the Chavda, Waghela, and Solanki dynasty, and about the Solanki dynasty, the administration of the Solanki dynasty, and their works. We are going to learn fact about that. A man roamed about the village street playing a song on his Ravan Hatta, wood violin. Have you seen ever Ravan Hatta? Let's see the picture. This is the picture of Ravan Hatta. अगर आप गांव में रहते हैं तो भगवे कपड़े पहनकर हमारे घर जो मांगने आते हैं, साड़ी या फिर कोई खाना मांगने आते हैं, जिसे हम बोलते हैं भरतरी। वो भरतरी जो होता है वो गाना बजाता है और गाना बजाने के साथ वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, जिसे बोला जाता है रावण हत्था। दिस इज द डिजाइन ऑफ रावण हत्था। A group of small children was also roaming along with him. He continued sing the same song repeatedly, the word of which are છેલા જીરે પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો. I think you have listened this song. છેલા જીરે કે મારી હાટુ પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો. In medieval period, art and culture developed in Gujarat. One of them is Patola of Patan. And Patola of Patan was discovered in Solanki dynasty in the period of Kumarpal period, King Kumarpal. Among the children who sang along with singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather about the Patola of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city Anhilwad, Patan. In Solanki dynasty period, Patan also known as Anhilwad Patan. Now let's know about some fact about the Patola. What is Patola? Patola is a double-icked sari. Here the picture of Patola. Patola is a double-icked woven sari, usually made from silk, made in Patan, Gujarat, India. They are very expensive. Once worn only by those belonging to royal and aristocrat families. It is said that this technique is taught to no one in the family but only to the sons. Only Khatri families make this patola. It can take 6 months to 1 year to make one sari due to the long process of dyeing each strand separately before weaving them together. ऐसा कहा जाता है कि एक पटोला को तैयार करने में 6 महीने से 1 साल का समय लगता है और वो सिर्फ पाटन में ही बनता है। और पाटन की एक पर्टिकुलर फैमिली है, 3 फैमिली, जिसे खत्री फैमिली बोला जाता है, वही लोग पाटन के पटोला बनाते हैं। इट इज़ वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Even Narendra Modi has gifted
to Obama's wife, Patan Patola. Patola is a sari. It is believed that Salvis, it is believed that Salvis went to Gujarat in 12th century with the intention of acquiring the patronage of Chalukya's Rajput, who ruled all Gujarat and part of Malwa and South Rajasthan at the time, with Anhilwad Patan as the capital. उस टाइम पे सोलंकी डायनेस्टी की जो कैपिटल राजधानी हुआ करती थी वो पाटन थी. वो पाटन को उस टाइम पे अणहिलवाड़ पाटन बोला जाता था. लेजेंड सेज दैट ओवर 700 पटोला weavers come to the palace of Raja Kumarpal on the personal request of king himself. ये जो कारीगर थे उन 700 कारीगरों को किंग कुमारपाल ने अपने दरबार में अपने पैलेस में बुलाया था और पटोला गुजरात में इनवाइट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कहा जाता है. इन द मिडिवल एज 746 CE to 1304 CE, approximately about 560 years ago, the Chavda, the Solanki and the Waghela dynasties ruled over Gujarat. उस टाइम पे मध्ययुग गुजरात में किसका राज्य था? चावड़ा, सोलंकी एंड वाघेला. During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan. और इन तीनों की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी अणहिलपुर पाटन, which later come to be known as Anhilwad Patan. What was name? Anhilwad Patan. Currently, Anawada village situated in Patan, that situated in the west of Patan was originally known as Anhilwad. महसाना के बाद जो आता है और पाटन, उसके बीच में एक गांव है जिसे बोला जाता है अनावाड़ा. एक्चुअल में वही अणहिलवाड़ कहा जाता था और उसे जोड़ के एक राजधानी बनाई, दैट इज नोन एज अणहिलवाड़ पाटन. According to the historical texts, the Chavda dynasty ruled over Panchasar. हिस्टोरिकल टेक्स्ट के हिसाब से चावड़ा वंश की जो रूल था, उनका राज्य सत्ता थी, वो कहाँ थी? पंचासर में थी. इट्स रूलर जय सिखरी अटेंडेड martyrdom in war. His son Vanraj Chavda recaptured his father kingdom. In place of the ruined kingdom, he established a new kingdom on the bank of the river Saraswati, which was known as Anhilwad Patan. It is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom and hence the territory was named Anhilwad Patan after it. यानी कि शुरुआत के दौर में पहले चावड़ा वंश आया. चावड़ा वंश का जो किंग था वो था जय सिखरी, और उसके शहीद हो जाने के बाद उसका बेटा था वनराज चावड़ा, जो उसके फादर को सक्सीड करके राजा बना था, और उसी ने ही ये अपना राज्य आगे बढ़ाया था. कौन सी नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे उसने बढ़ाया था, और वहीं पे उसने अणहिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी. और उसका एक दोस्त था, उसका नाम था अणहिल, और उसी की याद में उसने पाटन के साथ उसका नाम जोड़ा था, दैट इज कॉल्ड अणहिलवाड़ पाटन.
The Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. Thereafter, the Solanki dynasty ruled over गुजरात. यानी कि चावड़ा वंश के बाद चावड़ा ने 196 ईयर अपना राज्य किया इन गुजरात. Thereafter, the Solanki dynasty ruled over in Gujarat. Now let's see inscription carved on idol. During the rule of Solanki dynasty, Gujarat became a very prosperous. The Rajput era saw Ahilwal Patan emerge as one of the most powerful kingdom. यानी कि राजपूत टाइम पे अहिलवाल पाटन जो था वो काफ़ी अच्छा और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था. The king of this dynasty, Solanki dynasty, first king was Mulraj Solanki, second is Bhimdev Solanki, third is Siddharaj Jaisi. Siddharaj Jaisi is one of the powerful kings at that time. Kumar Pal were among the great rulers. The famous scholar Kalika Sarvagna Sri Hemchandracharya was patronized during the rule of Siddharaj Jaisi. सिद्धराज जैसी के टाइम पे वन ऑफ द पोएट राइटर हेमचंद्राचार्य श्री हेमचंद्राचार्य ही इज ऑल्सो नोन एज अ कलिका सर्वज्ञ. ही ऑल्सो ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. Ahilwal Patan became the main center of education and was known as a विद्याधाम. यानी कि शिक्षा लेने के लिए अहिलवाल पाटन को विद्याधाम बोला जाता था. ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य wrote a book on grammar, Siddhem Sabdanusasan. After its completion, the book was placed on seat tied unto the elephant and the procession was carried throughout the city. और ये ग्रंथ हेमचंद्राचार्य जो लिखा था वो सिद्धराज जयसी ने पूरे सिटी में पूरे पाटन पे हाथी के ऊपर सवारी करके सब में वो दिखाया था, घुमाया था, हाथी के ऊपर सवारी करवाई थी. बोथ द किंग सिद्धराज जयसी एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य accompanied the procession on foot. It was the first time that a literary text was given such enormous respect. पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लिखी गई चीज़ को, ग्रामर की बुक को, सिद्ध हेम शब्दानुशासन को पहली बार इतना मान सम्मान मिल रहा था. It was the first time that literary text was given such enormous respect. The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of Kumar Pal. At this time, the amalgamation of the non-violence is called Ahimsa, prosperity is called Lakshmi, and education is called Saraswati. गांधी जी ने जैसा कहा है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, प्रॉस्पेरिटी को उस टाइम पे लक्ष्मी और एजुकेशन को सरस्वती बोला जाता है. वॉज नोटिस्ड इन अहिलवाल पाटन. इन तीनों का समन्वय एक ही स्टेट में हुआ है ऐसा पहली बार हो रहा था. द किंग्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वेर ग्रेट रूलर्स. हाउएवर 6 ऑफ दिस रूलर रिनाउंस्ड their thrones to become a hermits. More information about on this can be obtained from your library. This is the book of Siddhem Sabdanusasan written by Sri Hemchandracharya
he is known as Kalika Sarvagna.